comedy. You have basically done comedy movies in past quite a lot, and also plays also. Yes. So this is a different story, different character also. So how was it difficult for you to do that? Well, firstly, it's not funny. Yeah, that's right. Just because of that, it's different. You are out from your comfort zone. I think it was very, very tough. You know, I'm not Punjabi, so to learn the dialect, to learn the language, I put on a lot of weight for the film. I'm not a father, so to play a father of three people and to make choices as a father of three people and understand that urgency was tough as well. The beard as well. I grew the beard as well. I didn't really have to work very hard for that. I just had to wait to grow the beard. But apart from that, I think there's a responsibility that comes with doing your first serious role or your first drama. So I just worked very hard so that people who have been coming to see me do comedy will hopefully take a gamble on watching me do some serious work as well. सोहा आपसे सवाल है आप फिल्म में ऑन स्क्रीन आप 3 बच्चों की माँ का किरदार निभा रही हैं, रियल लाइफ में आपकी सिस्टर इन लॉ माँ बनने वाली है, तो एक न्यू मेंबर आने वाला है फैमिली में, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा? थोड़ा और ब्रेक बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट है, वेरी एक्साइटेड. Harry, what was the trigger behind making this movie? Was there any personal connection or any reason specifically behind it? Well, I'm a movie buff. मेरे को सिनेमा में कुछ करने का बहुत शौक था और शुरू से कुछ ना कुछ कहानियाँ ढूंढ रहा था. कुछ कहानियाँ लिखी भी हैं, बट ये कहानी बहुत दिल के करीब थी. तो मैं चाहता था कि पहली कहानी पर्दे पे जो भी आए वो यही आए 31 अक्टूबर, क्योंकि ये स्टोरी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और जब एक्चुअली में हम उन लोगों से मिले, जाके मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं लगा कि 31-32 साल हो गए ये कहानी मेरे ख्याल से आज सिनेमा में जाना जरूरी था, क्योंकि एज अ यूथ जो आज देखें हम लोग हैं, आज यू से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 25-26 इयर्स. दे नीड टू नो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और द मैसेज विच गोज क्लियर इज द ब्रदरहुड. क्योंकि आप अगर याद करें तो उस ज़माने में हम सुनते थे कि एक पूरा जो हमारा जो कॉलोनी होता था वो एक भाई बहन का होता था. मतलब पड़ोस में भी शादी होती थी, डैड बताते थे, वो लगता था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है. तो वो तो खत्म ही हो गया. आप तो पड़ोसी तो एक दूसरे को, या कमरे वाले एक दूसरे को नहीं जानते. तो मैं चाहता हूँ शायद वो फिर से भाईचारापन या वो देख के शायद वो फीलिंग फिर से जागे और हम एक कॉलोनी परिवार की तरह रह सकें या एक बड़े कुटुंब की तरह रह सकें. Looking at the trailer, it seems like it's an anti-Congress movie. Anything that you would like to comment on this? And secondly, do you plan to show the movie to the Gandhi family? Have you spoken to them? मैं सबके Did लिए we see the same trailer? Listen, it's not a political film. Please don't politicize it. Anybody that wants to politicize this film, journalists, actors, politicians included, have nothing to do with the film. It is a story of 5 people. If you want to watch that story, come and see the film. This film has nothing to do with politics whatsoever. Not at all an anti-Congress film. And we would be happy for everyone to see this film. Soha ma'am. Yeah. Hi, Unnati from India. So I wanted to know, this is your, you have done Rang De Basanti. That was also a patriotic movie. So how different is that character from, playing that and now? So how different is that character? They're totally different characters. I mean, Rang De Basanti was a young college-going girl with a group of friends, and how they feel, how a certain patriotism, as you said, is awakened in them because of certain reasons. This is a completely different film. I don't know if, it's as everyone is saying, it's about brotherhood, and what it meant to me was, as someone who was very young when 1984 happened, and I also know people who were affected by it, and in Patodi also there was a Gurdwara that was ransacked in 1984. I have that memory of it as well. For me to be a part of something like this was more as an actor, to play a character that is different culturally from anything I've played before, to do a period film, to play a real life character, which is also an added responsibility, to play a mother, to do things like that. It was exciting as an acting opportunity, but I don't think that there are many parallels to Rang De, apart from, of course, Rang De, of course, had a part that was set in Punjab, but that's it. I disagree with the fact that it's a similar role, and certainly one is much more mature, this character, and goes through a completely different experience than Sonia from Rang De.
हैरी, माय क्वेश्चन इज भैया, जिनके ऊपर आपने मूवी बनाई है, जिस फैमिली के पर्टिकुलर, आर दे स्टिल एग्जिस्ट और आपने उनको मूवी बताई है, और व्हाट यू वांट दे सेड अबाउट? बट ये फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है और उनसे परमिशन लेके की मूवी बनाई है, क्योंकि उनकी कहानी उनकी डायरी में लिखी हुई थी, जो हमने उनसे ज़्यादा से ली और बनाई। और जैसे कि कहा कि जब रिलीज़ होगी तो उस वक्त हम फैमिली से परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे, पर अगर वो अलाउ करेंगे तो हम डेफिनेटली मीडिया के सामने फैमिली को लेकर आएंगे और आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। Hi, this is Simrita from Filmmaker. Yeah, my question is to the director. This side, towards your left. Here. हिंदी। Okay. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक सेंसिटिव इशू है, ट्रू स्टोरी है, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि आप उस मैटर को उतना ही सेंसिटिव रखें और साथ में लिबर्टीज लें उस पिक्चर के लिए, ताकि वो इम्पैक्ट आपका बना रहे एज अ फिल्म, एज अ स्टोरी? कितनी लिबर्टीज ली इम्पैक्ट के लिए? पहली बात तो हैरी सर ने जो स्टोरी लिख के रखी थी उसमें बहुत ही रियलिस्टिक लिख के रखा हुआ था, और मैं रियलिस्टिक फिल्में ज़्यादा करता हूँ, ना कि कमर्शियल। मराठी में जितनी फिल्में की मैंने तो रियलिस्टिक की है, पहली फिल्म हिंदी में कर रहा हूँ मैं, वो उन्होंने लिख के रियलिस्टिक रखा था। जब हमने गूगल और ये सारी चीज़ें रिसर्च की, उस दौरान जो फैमिली की कहानी सुनी, उनके कहने का तरीका था, जो किस तरह से कहते थे, मतलब बहुत रियलिस्टिक बता रहे थे, मतलब वो सुन के बहुत दर्द भी होता था। मुझे लगा कि ये जैसी घटना घटी है वैसे ही जाएगी तो ही लोगों को अपील होगी, ना कि उसको फिल्में बना के। इसमें कोई लिबर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो रियल है, जो घटनाएं घटी है, हैरी सर ने जैसे लिख के रखा था, वो जिस फैमिली की कहानी बता है उन्होंने जैसे बताया था, उसी हिसाब से आप जब देखोगे तो आप लगे कि उस दौर में आप भी जी रहे हो उस 84। इस तरह से मेरे लिए वो आसान भी है, क्योंकि वो फिल्म बनाना बहुत आसान हो जाता है, और मेरा दिमाग पहले से वैसे चलता है कि रियलिस्टिक चल, मतलब अपनी सी कहानी लगे, मैं खुद कोई भी देखे वो लगे कि वो खुद जी रहा है वो कहानी। फिल्मी कहानी में कोई वो सपने होते हैं, वो सपना तो बहुत आसान होता है देखने के लिए, मगर रियल जीना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे रियल दिखाना बहुत आसान लगता है। नहीं, मिली जुली भाषा, हिंदी और पंजाबी, ऐसा नहीं कि पूरी भाषा ही पंजाबी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो दिल्ली है, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते, पूरे लोग पंजाबी बोलते नहीं, और फैमिली में भी बहुत कुछ पंजाबी वर्ड, एक आध लाइन, बाकी हिंदी, ऐसा नहीं कि पूरी पंजाबी फिल्म लगे, ऐसा भी नहीं है। Soha, the movie is also clashing with Rakesh Omprakash Mehra's Mirzia. Any concerns on that front? No, I mean it's very difficult to get a solo release, but I think that they're completely different subjects, and there's certainly space for. What we were worried about was coming with a bunch of films, because then you get lost. But I certainly think that we can hold our own with Mirzia. Harry, how was the casting decided? What was the thought process behind the cast? Well, the thought was very simple. We wanted to have them the same look, the character, as the other real story character. And when we meet a lot of other actors, then we and Soha were kind enough to come for the screen test. Then Shivaji did the main role, जो dialogues और जो पंजाबी में हमने बोलने को बोला, और सबसे बड़ी बात जब कहानी सुनाई तो इनकी आंखों में मेरे को वो नमी और वो नजर आया, वो कनेक्ट नजर आया. So I think that was more than enough for me to have them on board, and I'm really happy and lucky that I have them for my film. Did you have any apprehensions about taking up the role, because you have had a very comic image as an actor? Whether any? No, I mean, if I'll be very honest with you, my journey in Bollywood has been like getting promoted in a company. You start out as an intern or a trainee, and you're trying to get a promotion every year. I started out with one scene in a film, 5 lines, and then I had 2 scenes in a film, and then I had 7 scenes in a film, and then it was ensembles, and now it's one of the leads. So for me, the idea is to grow every year and to do more and more things every single year. So I'm starting to make choices that I want to make. This is one of those choices. I work very hard to get here. एक सवाल की पहले फिल्म का नाम शायद जाने क्यों था और उसका नाम बदल के 31 अक्टूबर। नहीं, वो तो स्टार्टिंग का बहुत शुरू का टाइटल था, जब हम लोग शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो वो उसका रेलेवेंस नहीं था. टाइटल उसका शुरू से 31 अक्टूबर था, और वो डेट अपने आप में एक इतिहास में एक तिथि है जिसको सुनते ही याद आता है कि कुछ हुआ था 31 अक्टूबर को.
ये 31 अक्टूबर होने के कारण लोग ये भी समझ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। ऐसा नहीं है, ये आप 7 अक्टूबर को ही मान करके चलें।